In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss question numbers 4, 5 and 6 of chapter 10. The name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. Question number 4 is list changes in body that takes place at puberty. इसका आंसर है चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबरिटी. लड़कों में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती है ये हम देखेंगे. पहले नंबर 1 इज़ सडन इंक्रीज इन हाइट एंड वेट. इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ये बॉयज़ में चेंज आ जाती है आफ्टर प्यूबरिटी और ड्यूरिंग प्यूबरिटी. और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं. फेशियल हेयर्स सच एज बियर्ड एंड माउस्टैच डेवलप. माउस्टैच और बियर्ड जो है ये डेवलप शुरू होना हो जाती है. मसल्स डेवलप एंड शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर. मसल जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एंड शोल्डर जो होते हैं वो ब्रॉडर, दे बिकम ब्रॉडर. अब हम देखेंगे चेंजेस इन गर्ल ड्यूरिंग प्यूबरिटी. लड़कियों में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती है. नंबर 1 है डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स. नंबर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिगिन टू मैच्योर. इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नंबर 4 हेयर डेवलप्स under the armpit and in pubic regions. These are some of the prominent changes which takes place in girls during puberty. Question number 5 is prepare a table showing having two columns. Prepare a table having two columns depicting names of endocrine glands and hormones secreted by them. इसका आंसर है दो कॉलमों में है एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन्स दे सिक्रेटेड. द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस and ovaries. These are the endocrine glands which we have discussed in detail in this lesson. The hormones they secreted are pituitary gland secretes growth hormone, thyroid gland secretes thyroxine, adrenal gland secretes adrenaline, pancreas secrete insulin, testes gland secrete testosterone, ovaries secrete estrogen and progesterone. Question number 6 is what are sex hormones? Why are they named so? State their functions. Question number 6 जो है इसके 3 पार्ट्स है. पहला पार्ट है सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं. दूसरा पार्ट है इनको सेक्स हार्मोन्स क्यों बोलते हैं. तीसरा पार्ट है इनकी फंक्शंस क्या है. तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं. इसका आंसर है हार्मोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन्स. इन जनरल hormones work instantly when they are released in bloodstream. Sex hormones are different because they start to work later on. They gradually prepare in the body for reproduction. The sex hormones are responsible for the fundamental change in growth and development and stimulate the development of secondary sexual characters. The testes and the ovaries are the reproductive organs and both are stimulated by the pituitary hormone during puberty. That is the reason these are called sex hormones. Secondary sexual characters जो होते हैं यानी in girls or in boys. In girls breasts begin to develop. Male
Testes and ovaries are the reproductive organs and they produce the gametes, sperms and ova. The male gamete produces sperms and the female gamete produces ova. And during puberty or at puberty in boys, facial hair, that is mustache and beard, begin to develop. These features these features these features are boys and girls distinguish males from females, and that is why they are called secondary sexual characters. And these sex hormones are responsible for the secondary sexual characters. They distinguish these the sexual hormones secreted by pituitary gland. They are responsible to, to distinguish males from the females. And the third part of this functions of the hormones. The functions of sex hormones are: number one, in male, the testes produce the male sex hormone called testosterone. This hormone helps in the development and maintenance of the primary and secondary sexual characters and production of sperms. In female, the ovaries secrete estrogen and progesterone responsible for primary and secondary sexual characters. These are some of the functions of sex hormones. In males, they have specific function, and in females, they have specific functions. And these are the three questions, question number 4, 5, and 6, which we discussed in this session of virtual class. These are some of the important questions which you need to discuss and to read thoroughly so that you can understand these questions well. Hope you will understand these questions and write down in your science notebook. Assalamu alaikum.